Good morning, all of you. Welcome you all again. Today we start the practical of paper third. What is the name of paper third? So paper third is the form and functions. So in this practical, it's all based on the theory. So first of all, the first practical in this paper third is the study of polytene chromosome by temporary squash preparation of the salivary gland chromosomes of Chironomus larvae. So in theory, we have already discussed about the giant chromosome. So what is giant chromosome? So giant chromosome, it is the large size chromosome and they contains the they how they can identify. So the giant chromosome, they are identified by the radially staining, and they similar like the other organisms, they other chromosomes, they also carry they also transfer from one generation to next generation, and they carry some genes or some characters, but it is larger in size. That's why this chromosome is called as giant chromosomes. So principle of this practical, it is acetocarbonyl or acetoarsine is the nucleus stain. The acetic acid component swell the nucleus while the carmine arsine component stain the nuclear material. So in this practical, to identify the giant chromosome in the Chironomus larvae, first of all, these chromosomes will stained by the acetocarmine or acetoarsine. So this acetocarmine or acetoarsine, it is the न्यूक्लियर स्टेन. जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए इसे स्टेन करते हैं. तो मोस्टली जो हम क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, तो क्रोमोसोम स्टडी करते टाइम हम उसे एसिटोकार्माइन या तो एसिटोऑर्सिन से स्टेन करते हैं. तो ये दोनों है वो न्यूक्लियस, पर्टिकुलरली न्यूक्लियस स्टेन करते हैं. क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. तो न्यूक्लियस स्टेन करने का काम ये एसिटोकार्माइन और एसिटोऑर्सिन कंपोनेंट करते. तो जो एसिटोऑर्सिन है और एसिटोकार्माइन है, that is made by the acetic acid and carmine or arsine powder. So this acetic acid जो है that stain the nucleus, while the carmine component that stain the nuclear material. तो न्यूक्लियस हमने स्टडी किया है, तो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को स्टेन करने का काम एसिटिक एसिड करता है. और यदि हम एसिटोकार्माइन यूज करते हैं तो उसमें कार्माइन पाउडर रहती है. तो जो कार्माइन कंपोनेंट है वो क्या करता है? न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन करता है. सिमिलरली ऑर्सिन जो कंपोनेंट है वो भी न्यूक्लियर मटेरियल स्टेन करने का काम करता है. देन material. So for this practical, we have used the Chironomus larvae, then acetocarmine or acetoarsine stain, then slide, cover slip, forceps, pins, etc. So here must require that is Chironomus larvae. जो Chironomus larvae है उसके अंदर हमें giant chromosome study करते हैं. जो भी larvae है वो यहाँ पे मटेरियल क्या क्या चाहिए? तो कारोनोमस लार्वा चाहिए. देन स्टेन करने के लिए एसिटोकार्माइन या तो एसिटोऑर्सिन यूज किया जाता है. देन स्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप वो सब चाहिए. देन लेट डिस्कस अबाउट द जायंट क्रोमोसोम. सो ऑलरेडी यू हैव
studied in the theory paper, that is giant chromosome. Just I revise it. So chromosome or the giant chromosome, they will be radially stained, and they are these chromosomes are the vehicles of the inheritance. These chromosomes are also carry some characters from one generation to the next generation. So in some organisms, in certain stages of the life cycle, these chromosomes contain the large nucleus. So this large nucleus contains the large chromosomes. So the large size chromosome is called as giant chromosomes. So in giant chromosome, in theory, you have also discussed about the two types of giant chromosome, that is polytene chromosomes and Lambert's chromosome. So in polytene chromosome, they are mostly found in the salivary glands, cells of the dipteron larvae, or also these polytene chromosomes are observed in the Drosophila and Chironomus larvae. Then Lambert's chromosome, these are found in the some oocytes of some vertebrates like amphibia, reptiles, birds, etc. So let's discuss about the polytene chromosome. So these polytene chromosome, mostly they are present in the salivary gland of the Chironomus larva. Uh, this salivary gland mostly, or also these polytene chromosomes are present in the fat body cells, then Malpighian tubules, then tracheates, etc. in the dipteron larvae. Also, these in Drosophila melanogaster, these polytene chromosomes are present in the salivary glands. So, mostly in Chironomus or Drosophila melanogaster, these polytene chromosomes are present in the salivary gland. So, the first time this polytene chromosome that was discovered by scientist Balbiani in 1851. Then about the structures of this polytene chromosome. So structure, it is very minute, that is 200 mu in length, and it has the chromocenter. There is the patches of the heterochromatin, and it carries the 6 radiating arms. In the 6 radiating arm, the chromosome 1, it is rod shape. Then chromosome 2nd and 3rd, they are in the middle position, and each of these arm that will be represented by the 2 chromosomal arms. Then these chromosome 4, they are also present at the very short stem, and each chromosomes in that chromosome or each arm, they show the several 11 strands known as chromonymata, and this chromonymata having the alternate dark and light colored bands. So this polytene chromosome, that means the poly, that means many. So here many arms are present in these polytene chromosomes. In these polytene chromosomes, see the endopolyploidy. So endopolyploidy, that means the polytene chromosomes not undergoes the mitosis. So its size goes on increasing by the doubling the number of chromonymata, and the added chromonymata do not separate. So it called as the endopolyploidy. So it is the special features due to this endopolyploidy, the size of this nucleus or size of the chromosome that will be increased, and the normal chromosomes, they are converted into the giant chromosomes. So it is the reason यहाँ पे माइटोसिस नॉर्मली क्या होता है, जब भी सेल डिवीजन होते हैं उसके अंदर माइटोसिस होता है. माइटोसिस होता है मतलब जो भी सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होके वहां पे 2 सेल्स फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये इस केस में न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होता है, माइटोसिस नहीं हो रहा है, तो जो भी साइज है न्यूक्लियस की वो इंक्रीज होती जाती है. जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगी, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की साइज भी बड़ी हो जाएगी. तो ड्यू टू दिस एंडोप्लॉलिपॉइडी, these
polyethylene chromosomes that will be observed in the nucleus. Then the Balbiani ring, it is the also main features of this polyethylene chromosome. This Balbiani ring, this is the large puff or loops in polyethylene chromosomes. It is due to the uncoiling of the some chromonemata at interband region, and these loops are called as Balbiani rings, and these are the active site of the RNA synthesis. So for practical, when you performing this practical, in that practical you have to show यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, तो बाल्बियानी रिंग दिखानी पड़ती है, या तो जो डिफरेंट आर्म्स है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखते हो जॉइंट क्रोमोसोम में, और डिफरेंट आर्म आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. तो यहाँ पे सिंपली आप जो क्रोमोसोम फोर्थ है, क्रोमोसोम फोर्थ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट लूप लाइक स्ट्रक्चर है. देन जो इन दैट जॉइंट क्रोमोसोम देर आर, यहाँ पे आपको रेडियली जब हम स्ट्रेन करते तो वहाँ पे आपको बैंड्स और इंटर बैंड्स नजर आते. सो इन दैट केस देयर इज द मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल bands. They are also important, and you can clearly see in this microscope. Then at the center there is the nucleolus and chromocenter is present, and some there is the chromonemata or chasmata will be also there. In if we this is the Lamb-Rush chromosome, the second figure, first figure it is the giant chromosome. In that, which is polyethylene chromosome, and in second figure there will be Lamb-Rush chromosome. So in Lamb-Rush chromosome they are homologous pairing are present, and at some time there will be chiasmata region. At the center there is the axial filament, and on that axial filament at both sides these chromosomes are present. Then these Balbiani rings, these are present mostly in the polyethylene chromosome. MCQs के लिए वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. और मैटरनल और पैटर्नल जो स्ट्रक्चर है, these are also important, and you can draw here. So tell me, in here there is the not any descriptions about the Lamb-Rush chromosomes. So in your practical only the material is available only about the polyethylene chromosomes. तो यहाँ पे आप लोगों ने Lamb-Rush chromosome का राइट अप किया है. Lamb-Rush chromosome का आपने लिखा है जर्नल में? तो मैम ओके. तो जो पहले आप जो पॉलीथीन क्रोमोसोम के वही डायग्राम यहाँ पे सब आने चाहिए. ये जो सेकंड पेज पे है डायग्राम वो Lamb-Rush क्रोमोसोम की है, तो आप एडिशनली वहाँ पे निकाल सकते हो. लेकिन जो पॉलीथीन क्रोमोसोम के हैं, ये क्रोमोनेमाटा, बाल्बियानी रिंग, ये सब यदि एक ही पेज पे आते हैं तो भी चलेगा. ओके. Okay, then let's discuss about the second practical. So second practical in the paper third, that is based on the meiosis. So aim of this practical is the study of meiosis by smear technique from Tradescantia birds or any other plant material. So mostly for meiosis study we have take the flowering birds. So here in this practical we have take the Tradescantia bird. Tradescantia
It is the best example, and in that in that plant, we can easily see about the different stages of the meiosis. So first of all, as you know about the meiosis, in the meiosis, mostly the meiosis will take place in the two stages. That is meiosis first and meiosis second. So the practical principle of the practical, it is pollen mother cells isolated from the anthers of the immature flower buds appear spherical in shape. These are found to be undergoing division and appear to be various stages of meiosis. Acetocarmine is a nuclear stain. The acetic acid components make the nuclear enlarge, while carmine components stain the chromosome red in color. So here we can select the immature buds of the Tradescantia plant. जो फ्लावरिंग के पहले जो बर्ड्स रहते हैं वो हमें इस मेयोसिस प्रैक्टिकल के लिए हमें यूज करना है. वो यदि हम immature flower birds select करते हैं तो in that before the एंथर फॉर्मेशन हमें ये बर्ड्स यूज करने हैं. तो उसमें हमें जो पोलन मदर सेल्स है, पोलन मदर सेल्स स्पेरिकल शेप में हमें वहां पे नजर आएंगी. एंड इन दैट वी हैव इजीली स्टडीड द you can easily identify the different stages of the meiosis. And in that practical we have used the acetocarmine stain. acetocarmine stain क्यों यूज करते हैं? तो एक तो ये न्यूक्लियर स्टेन है. न्यूक्लियर स्टेन है, उसके अंदर एसिटिक एसिड एंड कार्बाइन कंपोनेंट रहते हैं. तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या करता है? जो सेल्स के अंदर और जो बर्ड्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को एनलार्ज करने का काम करता है. और जो कार्बाइन रहता है, कार्बाइन कंपोनेंट, दे विल बी स्टेन द क्रोमोसोम्स और they will be stain the chromosome in the red color. So for this practical, there will be requirement of the Tradescantia flower birds, then acetocarmine stain, forceps, needle, glass slides, cover slip, etc. Those who are required for the preparing the slides. So let little bit discuss about the theory of that practical. So during microsporogenesis, that means the pollen mother cells undergo the meiotic division, that is meiosis, that means the reduction cell divisions. So in reduction cell division, the chromosome number that will become reduced in the half number. If the parent cell or mother cell, there will be 2, and after the formation or after the meiosis, they become the N. So meiosis, there will be consist of the meiosis first, it is the reduction division, and in meiosis second there will be equational division. So the stages of this meiosis first are there will be prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. And after the completion of the meiosis first, it goes to the meiosis second, and again this meiosis second will consist in the prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second. In theory, already you studied the mitosis and meiosis in last year. So same like, but here only the meiosis is included in your practical. So as you know, the prophase 1 in meiosis first, prophase 1, it is the prolonged stage. It is very long stage, and this prophase 1, it is having the long durations, and they are further subdivided into the 5 sub stages. So in the prophase 1, there will be again 5 stages, that is lactotine, zygotine, pachytine, diplotin, and dikinesis. So in leptotine, the chromatin, they will be in the condensed to form the individual thread-like structure. Then in zygotic, these chromosomes, they are forming the pairing of the homologous chromosomes. Then in pachytine, the main stage in the pachytine, that will be crossing overs will be
takes place. So in this pachytene stage, which is also called as the pachynyma, the crossing over between the non-sister chromatids of the homologous chromosomes will be takes place. And here, due to these crossing overs, the recombinations in the genes will be takes place. Then after pachytene, there will be diplotin. In diplotin, and the chiasma that will be open out, and the repulsion of these homologous chromosomes will be takes place. Repulsion, that means they will be forced into the two sides. Then next one is the dikinesis stage, or which is last stage. In dikinesis, again there will be formation or appearing the chromatids or spindles will be starting. Then nuclear membrane or nucleolus, they will be disappears. Then homologous chromosomes are attached at the spindle fiber. Then this is the प्रोफेज वन. प्रोफेज वन में क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सब डिसअपियर हो जाता है. जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स जो पोलर और सेंट्रल जो लाइन रहते हैं, सेंट्रल लाइन पे वो अरेंज हो जाते. देन आफ्टर मेटाफेज कौन सी स्टेज आफ्टर प्रोफेज कौन सी स्टेज आती है, तो मेटाफेज आती है. मेटाफेज में क्या होता है कि जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दे विल बी अटैच्ड एट द सेंटर्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर. जो स्पिंडल फाइबर वहां पे फॉर्म होते हैं, उसके सेंटर में ये जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो अटैच हो जाते. देन एनाफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स है वो पोलर साइड्स पे मूव हो जाते. तो homologous chromosomes, they will be separate out and they will be moved toward the opposite poles. And due to this moving, the reduction number of the chromosomes will be takes place. जो भी क्रोमोसोम्स है वो हाफ ऊपर की तरफ जाते हैं, हाफ जो रीजन है वो नेक्स्ट पोल की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम है वो हाफली वहां पे डिवाइड हो जाते हैं. देन इन टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम दिस विल बी अनवाइंड, दे फॉर्म्स क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, दे विल बी appear. So here this nucleus, they will be divide out and they will be form the two separate nucleolus. So this is about the meiosis first. So in meiosis, main that there meiosis first, it will be reductions of the nucleus will be takes place. Reduction, that means जो भी सिंगल न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होके यहाँ पे, और जो भी क्रोमोसोम्स है उनका डिवाइडेशन होके वहां पे टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. और मियोसिस फर्स्ट में 5 स्टेजेस है. उसमें जो प्रोफेज वन है, प्रोफेज वन प्रोलॉन्ग रहते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है उसका. उसके अंदर अगेन 5 सब स्टेजेस रहते हैं, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. एंड देन दिस meiosis first, then metaphase first, anaphase first and telophase first will be takes place. Then these cells will be undergo the meiosis second. So meiosis second, and that will be takes place similar like the माइटोसिस. माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे भी अगेन दिस सेल्स अंडरगो द इक्वेशनल cell division. That means the sister chromatids, they will be separate, and due to this division, the chromocenter or they will be moved towards the opposite poles. So यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें क्या करने का रहता है, तो इसके लिए हमें एक स्लाइड लेनी है. इसके लिए हमने जो फ्लावर बर्ड्स, एक स्मॉल साइज फ्लावर बर्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं, जो फ्लावर ओपनिंग के पहले के जो भी है फ्लावरिंग बर्ड्स, वो हमें पहले प्लांट से निकाल लेने हैं. देन
these flower buds that will be dissect out, and isolated anthers will the help of needle अंडर द डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप. तो उसके अंदर जो एंथर्स रहते हैं, एंथर्स हमें नीडल की हेल्प से वो बाहर निकालना है. देन दीज एंथर्स दैट विल बी टैप्ड आउट, नीडल की हेल्प से हमें वो जो एंथर है एंथर के ऊपर टैप्स करना है ताकि एंथर के अंदर जो पोलन मदर सेल्स है, पोलन मदर सेल्स बाहर आ सके. देन दीज on the slide adds stain, that is acetocarmine, and then they will be smear out. So till up to the 10 minutes we are waiting because for staining of the nuclear material the we can keep the slide for the 10 minutes. Then after the 10 minutes ensure that the हमें वो स्लाइड ड्राई नहीं वो जो हम स्लाइड बना रहे हैं वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हैं. सो वी स्लोली कवर अप द add the cover slip on that slide and just press gently so the excess stain they will be blot away, and then we can observe the slides on the microscope. First of all, we adjust the slide on low microscope. Then after the visualizing these nucleus, then we can adjust the microscope on the high power or the compound microscope. So here we can, if we adjusting the microscope on high power, then we can easily see the different stages of the meiosis. So in this practical, we have observed the different stages of the meiosis in meiosis first as well as meiosis second. So this is your practical second, that is ये आपको परफॉर्म करने के लिए रहता है. तो इसमें आपको फ्लावरिंग बर्ड्स दिए जाते हैं, उसको आपको स्मेयर प्रिपरेशन करना है. स्मेयर प्रिपरेशन करके आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो उसमें आप डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे देख सकते हो और जो भी स्टेजेस है वो आपको आइडेंटिफाई करने की रहती है. सो फॉर टुडे आई स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट